उसका डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स इज इधर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे कि पहले में हम लोगों ने डिस्कस किया है, रिपीटिंग एक्सपेंशंस एंड वाइस वर्सा। तो ये हम लोग को पता है कि एनी डेसिमल फ्रैक्शन विच इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आर कॉल्ड रियल नंबर्स। तो फॉर एग्जांपल 0.54, 1.444444, 4.565656 एटसेट्रा, ये सारे के सारे क्या हैं, सेट ऑफ जो है रियल नंबर्स हैं इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल फ्रैक्शनल नंबर। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ irrational numbers is non-terminating, non-repeating expansion and vice versa. For example 1.02002 0002 00002 डॉट कंटिन्यू, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और इसमें जो रिपीटेशन है वो तो नहीं है, लेकिन हाँ ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन नंबर है। और सेकंड एग्जांपल 34.77 888 777 888 7777 डॉट 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 डॉट। इसको हम लोग ये देख सकते हैं कि सपोज x इक्वल्स p बाई क्यू बी ए रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power m and 5 to the power n, where m and n are non-negative integers. So then x has a decimal expansion which terminates, and if prime factorization of q is not of the form 2 to the power m 5 to the power n, then x has a decimal expansion which is non-terminating repeating. इसमें ये हम लोग देख सकते हैं कि ये लाइन आप देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि then x has a decimal expansion which terminates, and if prime factorization of q is not on the form of the form 2 to the power m 5 to the power n, meaning multiple of जो है ये 10 है, then x has a decimal expansion which is non-terminating and repeating. Now decimal expansions of numbers. The first, the decimal expansion of a number can be either terminating or non-terminating or non-reoccurring or non-terminating reoccurring. So if we want to see, we can easily see here a decimal expansion in the form where remainder becomes 0. For example 54 divided by 9 equals the remainder gives out 0. So this is the terminating decimal fraction and this is the rational number. So terminating decimal is always a rational number. It can be written in the form p by q. Here is the example of non-terminating reoccurring. In the form when the number is divided by other, the remainder never becomes 0. Instead, the numbers of the quotient start repeating themselves. Such numbers are classified as rational numbers. For example 3.7250, 7250, 7250, 7250. Here the repetition is occurring and 7250 is the number 7250 which is periodic. So 7250 is the repeating number again and again and again. So we can see in this example 7250 have started repeating itself, hence it is a rational number. It can be expressed in the form p by q.